Good morning, everyone. Again, online guys, can you guys hear me? Can you guys see my screen? Yes, sir. Yeah. Okay. I'm able to see your screen. Yeah, thank you. Okay, today I will give you a basic idea. How does a data analyst job will be? Okay, once you get into a data analyst job, generally what all things you need to do. Okay, I will take a kind of small project kind of thing with some requirements, and then we will see how things will happen. Okay, I'm not explaining how to do things now. Okay, in this session I am not going to explain you कि आपको कैसे करना है. In this session you should be able to understand कि आपको करना क्या है. Okay, from next session onwards, step by step how to do it, that I will teach you. Is that clear? Is that okay online? Yeah. Yes, sir. Right. So for example, you were joined in a company as a data analyst or Power BI developer or consultant. See, the names will differ, but the work will remain the same. Okay, from the starting of my career, initially my role was junior data analyst, and then it became data analyst, then it became consultant. Different companies I am telling, but the work is same. Okay, senior consultant. Now I am working, previous company I was working as a senior analyst. Now I am working as a senior application developer, but my work is same. Okay, company come to company, your designation may change. The way they call a data analyst may change, but the work will remain always same. Okay, right. So for example, so basic our work is what? To analyze the data. ठीक है, बेसिक हमारा काम क्या होता है? डेटा को एनालाइज करना. राइट. तो डेटा को एनालाइज करना मतलब क्या? वी नीड टू हैव डेटा. ओके, आप कोई भी कंपनी में काम करो, व्हेन यू आर डूइंग एनालिसिस, जब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, यू नीड डेटा. फॉर एग्जांपल, यू गॉट ए रिक्वायरमेंट, आपको एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिलेगा कि क्लाइंट से या कस्टमर जो भी है आपका मतलब काउंटर पार्ट, ही विल गिव यू सम रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जांपल, he has given you some requirement कि आपको ये सब मुझे एनालाइज करके दिखाना है. क्या दिखाना है? he says मेरा कंपनी का टोटल सेल्स कितना है, ओवरऑल सेल्स. he will say टोटल प्रॉफिट कितना है. he will ask you टोटल quantity sold. Okay, what is the total discount we have given. ठीक है. और he may ask you, let me know each category, उनके पास जितने भी कैटेगरीज है, बाय सेल्स, ईच कैटेगरी का सेल्स कितना है. ठीक है. ईच सब कैटेगरी और उसका सेल्स क्या है. और बोलेगा सब कैटेगरीज मेरे बहुत है, इन माय कंपनी आई हैव सो मेनी सब कैटेगरी प्रोडक्ट्स. आई डोंट वांट टू सी एवरीथिंग, आई वांट टू सी ओनली द टॉप 10 सब कैटेगरीज. सब कैटेगरीज which are giving highest profits. मतलब क्या है इसका? रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? मुझे टॉप 10 सब कैटेगरीज दिखाओ जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है, मगर आपको उसका विजुअलाइजेशन में सेल्स दिखाना है. मतलब फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3 सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी 1, सब कैटेगरी 2, सब कैटेगरी 3 और सब कैटेगरी 4. ओके, इसका सेल्स है 10, इसका सेल्स है 12, इसका 9 है, इसका 8 है. ठीक है, मगर इसका प्रॉफिट 12 है, इसका प्रॉफिट 10 है, इसका प्रॉफिट 9 है, इसका प्रॉफिट 11 है. Now my requirement is what? Show each subcategory and sales. Okay, each subcategory and sales मतलब क्या है? ये sales है, ये profit है. ठीक है. Each subcategory and sales मतलब I want to show this.
मुझे विजुअल में ये दिखाना है। मगर मैं क्या बोल रहा हूं, शो टॉप 10 सब कैटेगरी विथ हाईएस्ट प्रॉफिट। अगर मुझे टॉप 2 सब कैटेगरीज या 10 की जगह 2, ओके, इफ आई वांट टॉप 2 सब कैटेगरीज विच आर गिविंग मी हाईएस्ट प्रॉफिट्स, मतलब क्या है, मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट्स कौन से दो दे रहे हैं, ये वाला एंड ये वाला, राइट। सब कैटेगरी 4 is giving me the highest profit, right? सब कैटेगरी 1 is giving me the second highest profit, right? तो यहां पे मुझे क्या दिखाना है, 1 and 4 दिखाना है। विजुअलाइजेशन में क्या दिखाना है, 1 and 4, मतलब मुझे सेल्स ही दिखाना है, बट जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसका सेल्स दिखाना है। क्लियर एवरीवन, गाइस ऑनलाइन? Yes, sir. Right, okay. And then some other requirement, let's see. For example, I will say each segment by sales. अब 7 लेते हैं, ठीक है। So for example, this is a simple requirement they have. There will be much more. Okay, इतना simple नहीं रहेगा. They may ask you year or year growth क्या है, month over month growth क्या हो रहा है, कौन से ईयर में ज्यादा सेल्स हुआ है मुझे, कौन से ईयर में सेल्स कम हो रहा है, कौन सा salesman is performing well, which sales persons are not performing well. Okay, there will be so many kind of things. So first start with the basic one, simple one we are taking. Okay, so this is the requirement given to you, and they will ask you to build a dashboard, build a report, नॉट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड इज डिफरेंट। ओके, पावर बीआई में हम जो बनाते हैं उसको रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। 2 पार्ट है पावर बीआई में, एक है पावर बीआई डेस्कटॉप, एक है पावर बीआई, आई विल कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन। ओके, सो जो हम डेवलप करते हैं उसको रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड यूजर जो है, क्लाइंट जो है, ही मे कॉल इट एज अ डैशबोर्ड, बट टेक्निकली इट इज रॉन्ग, इट इज अ रिपोर्ट। डैशबोर्ड एक और चीज है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके, तो व्हाट दे विल टेल, ये है हमारा रिक्वायरमेंट, आप रिपोर्ट बना के दिखाओ, डेटा एनालिसिस करके रिपोर्ट बना के दिखाओ। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। ओके। नेक्स्ट सी, रियल टाइम में ऐसा ही होता है, दे विल थ्रो यू वन डॉक्यूमेंट जिसमें होता है रिक्वायरमेंट, एंड दे विल आस्क यू टू बिल्ड द रिपोर्ट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट दिया है एंड आई विल आस्क यू टू बिल्ड द रिपोर्ट, व्हाट यू विल डू। Sir, first of all, we will go to the data and see what are the requirements that has been provided to us. करेक्ट, वेयर इज द डेटा? Data in the sense it is well available in our system or in database. विच डेटाबेस? कैसे पता चलेगा? So you need to ask questions. Okay, we should not assume. First point in data analysis, always remember, do not assume. Okay, do not assume anything. और एक requirement है, each region उसका revenue. Okay, so first point, you do not assume anything. जो भी doubt है direct पूछना है, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव फेस्ड दिस इन द इनिशियल ऑफ माय करियर। ओके, जब मैं नॉन आईटी से आईटी में मूव किया था बहुत साल पहले, व्हेन आई गॉट द रिक्वायरमेंट, आई वाज आल्सो थिंकिंग लाइक यू कि हाँ, रिक्वायरमेंट आ गया मतलब मेरे पास सब कुछ है, नाउ आई नीड टू वर्क। नो, ओके, यू नीड टू आस्क। जैसे रिक्वायरमेंट आएगा, पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, व्हाट इज द डेटा सोर्स? ओके, आपका डेटा सोर्स क्या है? यू आर द बिजनेस, आपका बिजनेस है, आप मुझे रिक्वायरमेंट दे रहे हो बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ पे है, मुझे नहीं पता होता है, ठीक है। इफ सपोज आई एम गिविंग यू अ पार्सल एंड आस्किंग यू टू डिलीवर इट एट माय होम, हु नोज द होम एड्रेस? आई ओनली नो द होम एड्रेस, आई नीड टू गिव यू द होम एड्रेस, देन ओनली यू कैन गो एंड डिलीवर। सो हाउ यू विल गेट टू नो? यू नीड टू आस्क मी, आपने मुझे एक पार्सल दिया है डिलीवर करने के लिए, एड्रेस बताओ कहाँ पे है। So until unless you won't ask, I won't tell you. IT में generally they will not give you much information. They will think that everything you know. Okay. Once you get the requirement, immediately you need to ask, what is the data source?
For example, he says my data source is SQL server. Okay, मेरा data SQL server में store होता है. He has given. Then you need to ask some more questions. What are the connection details? SQL server में है, ठीक है, मैं SQL के साथ कैसे कनेक्ट करूं? मुझे कनेक्ट करने के लिए एक एड्रेस चाहिए, ये सर्वर का नाम चाहिए, डेटाबेस का नाम चाहिए. ओके, दैट आई डोंट नो. यू नीड टू टेल मी. यू आर द बिजनेस, यू नीड टू टेल मी आपका डेटा कहाँ पे है, राइट? सो यू नीड टू आस्क देम. देन कनेक्शन डिटेल्स मतलब क्या होता है? मेजरली योर सर्वर नेम And credential password. database name and credentials. Okay, credentials matlab username and password. Password. Okay, these are the important things you need to have to connect. ठीक है? Till now clear, guys? Online? Yes, sir. Yes. Right. So once you have this information, still you have some more questions. आपने डेटा इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया है, उसमें बहुत सारे टेबल्स होंगे. There will be thousands of tables, hundreds of tables will be there. For your project, do you need all the tables? Not No. required. Not required. So you need to ask them what are the tables required for the given requirement. ओके, कौन से टेबल चाहिए? आपने जो रिक्वायरमेंट दिया है उसके लिए कौन से टेबल चाहिए? दिस डेटा, दिस इंफॉर्मेशन आपको डेटा इंजीनियर देगा. डेटा इंजीनियर का काम क्या है? डेटा प्रिपेयर करना. ओके, ये इंफॉर्मेशन भी डेटा इंजीनियर ही देगा. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग्स डेटा इंजीनियर ओनली विल गिव, बिकॉज डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है? डेटा प्रिपेयर करना. ओके, ही विल प्रिपेयर द टेबल्स, ही विल प्रिपेयर द व्यूज. डेटाबेस में जितना भी काम होता है दैट विल बी डन बाय डेटा इंजीनियर. सो एक प्रोजेक्ट में, एक डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट में मेन की पर्सन आर टू. एक है डेटा एनालिस्ट या फिर डेवलपर जो भी है, रिपोर्ट डेवलपर, एंड द सेकंड पर्सन इज डेटा इंजीनियर. ओके, इन दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आप जब डेवलप करोगे आपको जो भी चाहिए बैकएंड से, दैट पर्सन विल गिव यू. उसको जो भी बैकएंड में डेवलप करना है उसका इंफॉर्मेशन फ्रंट एंड में जो आप काम करते हो वो आपको देना पड़ेगा. ठीक है? सो दिस टू पीपल शुड हैव ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. अगर इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, देन द प्रोजेक्ट इज गॉन. ओके, राइट. So what are the tables required? For example, he will tell only one table is required, that is orders table. ठीक है, एक ही टेबल चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑर्डर्स टेबल से मिल जाएगा करके वो बताएगा. ठीक है? So now you got all the information to build the report. ठीक है? ये जब तक नहीं है आपके पास, you cannot start the development also. Clear? Guys, clear online? Yes, sir. Yes. Right. And these questions you need to ask. Until unless you don't ask, they won't give you. They may think you already have, or else your team has provided. Until unless you ask, they won't tell. Some people will tell, but I have seen most of the cases they will not give you. हम लोग क्या सोचते रहेंगे कि अरे यार, मतलब सब आ गया रिक्वायरमेंट, we need to build the report, I don't know where to start. नेक्स्ट डे तक हम वैसे ही बैठे रहेंगे. नेक्स्ट डे जब फिर से स्टैंड अप कॉल होगा, मतलब स्टेटस कॉल होगा, वी विल टेल दैट आई डोंट नो हाउ टू कनेक्ट इट. देन ही विल आस्क यू शुड हैव आस्क्ड मी यस्टरडे ओनली. वन डे पूरा लॉस है, राइट? एक दिन पूरा गया, राइट? सो यू नीड टू आस्क, देन ओनली यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन. ओके, वी गॉट द इंफॉर्मेशन. तो मेरा ये SQL सर्वर है, ये मेरा सर्वर नाम है. आई विल टेल यू हाउ टू इंस्टॉल ऑल दिस थिंग्स. ओके, today is just to understand what is the work you are going to do. How to do and all I am not explaining. How to do I will tell you later. Okay, तो ये मेरा सर्वर है, इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस है. So I want to connect to this one. Okay, सेल्स एनालिटिक्स जो उससे कनेक्ट करना है, और इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स है, इसमें मुझे ऑर्डर्स टेबल को कनेक्ट करना है. ठीक है, राइट? एंड वन मोर थिंग यू नीड टू चेक. आपको पास जब मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, यू नीड टू चेक, डू आई हैव द एक्सेस टू द गिवन टेबल्स. ओके, तो यू नीड टू आस्क देम कि ये जो आप टेबल बोले हैं इसका एक्सेस मेरे पास है कि नहीं. ओके,
क्योंकि उस डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होंगे, उस कंपनी रिलेटेड बहुत सारे टेबल्स होंगे विच विल बी यूज्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज होंगे। तो आपको जो टेबल चाहिए उसी टेबल्स का एक्सेस दे विल प्रोवाइड यू। ओके, तो वो एक्सेस आपके पास है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। वो चेक करने के बाद देन योर डेवलपमेंट विल स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, वी विल ओपन आवर पावर बी। आपका रियल टाइम में भी सेम पावर बी सेम ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, एग्जैक्टली सेम 100% सेम। నీకు దండం పెడతానే ఉంచే అవి నేను కడుక్కుంటానే. Somebody needs to mute. Okay, we need to start the development. So हम Power BI desktop open करेंगे। This is my Power BI desktop. I will go to blank report. This interface कहाँ से कैसे जाना है वो सब I will tell you later. Okay. So I will go to get data. पहले मुझे डेटा को Power BI के अंदर लाना है, ठीक है। I will go to get data. मेरा डेटा कहाँ पे है, SQL सर्वर में है, राइट। सो मैं SQL सर्वर कनेक्टर को यूज करूंगा। अगर कहीं और है I will click on more. I have so many connectors here. ठीक है, आपका डेटा कहाँ पे भी हो you will be able to connect it from Power BI. Oracle में हो, Databricks में हो, SharePoint में हो, कहीं पे भी हो you have the option to connect. So right now we want to connect it to SQL Server. So I will select the SQL Server database connector, ठीक है, and then click Sir, on sorry to interrupt, sir. So you can get data from JSON file also? anywhere you can get it. Okay. You can go here, you go with more and you can just type JSON. Okay, you have the JSON connector. Okay. Yeah. Okay. So SQL Server database and connect. Then it will ask you the server name, database name, it will ask you. Okay. So my server name is this, data they will provide. कौन से server में data है they will provide you. So that server name you will put it here. Database name optional है, आपके पास अगर है you can put it. अगर नहीं, आप if you are not inserting this one, इस server के अंदर जितने सारे database है सब कुछ दिखाई देंगे आपके पास जो भी access है, ठीक है। So I am not putting as of now and click on OK. So what it will do, Power BI will go and connect with the SQL server. Okay, मेरा सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया। इस सर्वर के अंदर इतने सारे डेटाबेसेस है मेरे। If you go here and see how many are there, 1 2 3 4 5 6 7 databases I have under this server. Okay, so if you see here also the same number of databases you will see, ठीक है। हमारा डेटा कहाँ पे है, सेल्स एनालिटिक्स डेव में है, right? This is the database name. So I will go here and I have so many tables and views here, but I am interested in orders tables. So whichever table we need, you need to select that table. अगर multiple tables चाहिए, you will select multiple options from here. ठीक है? So I need only one as of now, so I am taking the orders table. उसके बाद I will click on, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा, मतलब उस डेटा उस टेबल में क्या डेटा है, that is what you can see it here. Okay? So उसके बाद what you will do, you will click on load. लोड करने से क्या होगा, आपका डेटा पावर BI के अंदर लोड हो जाएगा। ओके, डेटा ऑर्डर्स टेबल आ गया। यहाँ पे आप इफ यू एक्सपैंड दिस वन यू विल सी ऑल द कॉलम्स अवेलेबल इन दैट टेबल। ओके, उस पर्टिकुलर टेबल में जो भी कॉलम्स थे वो सारे इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट हियर। एंड देन हियर लेफ्ट हैंड साइड दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू मतलब यहाँ पे आप रिपोर्ट बनाओगे। आई विल टेल यू दिस थिंग स्लोली लेटर ऑन। ओके, नाउ यू वांट टू सी द डेटा। डेटा कैसा है आपको देखना है तो आप टेबल व्यू में जाओगे, यू विल सी द डेटा, what is the data available there in this table, that entire data you will see it here. Okay, this is just for view purpose. Now I want to, हमारे पास एक ही टेबल है, so I don't need to build any data model. Okay, यहाँ पे data model बनता है, that I will tell you later. Okay, when we go to that level I will tell you. ठीक है, यहाँ पे डेटा मॉडल हो जाएगा। अगर आपको कुछ क्लीनिंग करना है, डेटा क्लीनिंग करना है,
तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे तो यू विल गो टू पावर क्वेरी एडिटर. ओके, वी हैव थ्री मॉड्यूल्स इन पावर BI डेस्कटॉप. एक है पावर व्यू, एक है पावर क्वेरी, एक है पावर पिवोट. पावर क्वेरी का काम क्या है? डेटा क्लीनिंग. फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मतलब डेटा शेपिंग. फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये सीए है, राइट? सेकेंड. ओके, यहाँ पे सीए है, उसके बाद यूएस है, राइट? फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए? सीए मतलब कनाडा होना चाहिए, यूएस मतलब यूएसए होना चाहिए. सो आई विल कम एंड डू द रिक्वायर्ड क्लीनिंग हियर इफ रिक्वायर्ड. जनरली आप डेटाबेस के साथ जब कनेक्ट करते हो, आपका क्लीनिंग पार्ट विल बी टेकन केयर बाय द डेटा इंजीनियर. ओके, डेटा इंजीनियर वो सब आपको जैसे चाहिए वैसे बना के देगा. बट फॉर एग्जाम्पल योर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एक्सेल डेटा, एक्सेल से आप काम कर रहे हो, देन डेटा इंजीनियर विल नॉट हेल्प यू. डेटा इंजीनियर आपको हेल्प करेगा जब आपका डेटा डेटाबेस में है. ओके, सर्वर में जब है तभी वो हेल्प करेगा. अगर आपका डेटा छोटा मोटा एक्सेल फाइल से, सीएसवी फाइल से आ रहा है, देन ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. देन व्हाट एवर क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड दैट वी नीड टू डू बाय आवरसेल्व्स. ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मुझे सीए की जगह कनाडा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको सिलेक्ट करूंगा, रिप्लेस वैल्यूज पे जाऊंगा एंड आई विल से सीए को रिप्लेस करके कनाडा. So it will be replaced. Similarly, I want to replace US as USA. तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा. उसके बाद मुझे बस कंट्री का नाम चाहिए. So maybe I will come here. I will say split column by delimiter. I will tell you all those things later. Okay? लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर मैं बोलूंगा, ओके कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ मेरा कंट्री का नाम यहाँ पे आ जाए. सो आई विल नेम इट एज फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी है एक नाम. ओके, सो लाइक दिस यू कैन गिव ए नेम, राइट? सो इसका मतलब क्या है? पावर क्वेरी में यू कैन डू व्हाटएवर द क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, राइट. सो नाउ आई विल गो बैक. सो मैं क्या करूंगा? क्लोज एंड अप्लाई. सो जो भी चेंजेस मैंने किए पावर क्वेरी में वो अप्लाई होके यू विल बी बैक टू योर मेन प्लेस. जो आपका रिपोर्ट व्यू है, जहां पे आप रिपोर्ट बनाओगे, वहां पे यू कैन कम बैक, राइट? सी, आई एम गोइंग वेरी फास्ट नाउ बिकॉज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू एनीथिंग. Okay, I am just showing you what all things can be done. How to do, I am not yet started. I will go very slow from next session. ठीक है? Great. So done. Now we will see हमारा requirement क्या है. पहला requirement क्या है? Total sales दिखाना है मुझे. ठीक है? So I will go to the data. मुझे sales अगर दिखाना है, so what I need? अगर मुझे total sales दिखाना है, what I need? कौन सा कॉलम चाहिए हमें? सेल्स का कॉलम चाहिए, राइट? So we will go to our data and we will search sales column हमारे पास है कि नहीं. So we have a sales column, right? So कौन से विजुअल में दिखाना है? सेल्स एक एग्रीगेटेड वैल्यू है, एक ही नंबर दिखाई देगा, राइट? So I will go with a कार्ड विजुअल. एक कार्ड विजुअल को लूंगा मैं यहाँ से and I will resize. Just you need to select the visual. ठीक है? आप विजुअल को सेलेक्ट करोगे, वो यहाँ पे आ जाएगा. आप कोई भी विजुअल सेलेक्ट करोगे, accordingly it will come here. ठीक है? Right? So I will remove this as of now. मैंने कार्ड विजुअल लिया है, इसमें सेल्स डालना है. यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर डायरेक्टली. ओके, या फिर यू कैन जस्ट क्लिक द चेक बॉक्स, या फिर यू कैन पुल इट इनटू द फील्ड्स. ऑल आर सेम, यू कैन डू एनीथिंग. ओके, सो यू गॉट द टोटल सेल्स, राइट? ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, सो आई विल डू सम फॉर्मेटिंग. ओके, फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू सेलेक्ट द विजुअल. आप सेलेक्ट करोगे, देन इन द विजुअलाइजेशन पेन यू विल सी समथिंग कॉल्ड फॉर्मेट योर विजुअल. अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे, देन यू विल नॉट सी दैट ऑप्शन, सम अदर ऑप्शन विल कम. आपको जो विजुअल सेलेक्ट मतलब फॉर्मेट करना है, उस विजुअल को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा एंड देन यू गो टू द फॉर्मेट योर विजुअल एंड यू कैन से मुझे नीचे ये नहीं चाहिए, सो आई विल टर्न ऑफ द कैटेगरी लेबल. ओके, और मुझे टाइटल देना है, तो मैं जनरल में आके यहाँ पे आई विल गिव द टाइटल एज टोटल सेल्स. ठीक है? इसका फॉन्ट चेंज करना है, सो आई विल कम हियर एंड डू द चेंजेस. उसके बाद मुझे यहाँ पे
इफेक्ट्स थोड़ा देने हैं, विजुअल बॉर्डर को ऑन करूंगा, शैडो को ऑन करूंगा, तो यू विल गेट ए बॉर्डर लाइन विथ सम शैडो। ओके, ये बॉर्डर लाइन बहुत ही स्टीप है, आई वांट टू मेक इट लाइटर, सो आई विल गो बैक देयर अगेन। Guys, if you have any questions, please unmute and ask. It will be difficult for me to go to the messages every time. Okay, तो इसको मैं थोड़ा लाइटर शेड दे दूंगा और कॉर्नर्स को थोड़ा मैं रेडियस दे दूंगा, सो दैट इट विल कम, शार्प एजेस नहीं आएंगे, इट विल कम ए रेडियस वन। ओके, if you are not familiar with tables, database and servers, then don't worry. Okay, right. Okay, we will go things in detail later on. Okay, I'm just giving you an overall view कि आपको as a data analyst what all things you are going to do, that is what I'm trying to tell you. Okay, how easily we can develop a report, that is what I'm trying to show. We will come back to each, मैं आपको पहले से start करूंगा, इसको क्या बोलते हैं। This is called ribbon menu. This is one of the home tab, insert tab. इसको data pane बोलते हैं, इसको visualization pane बोलते हैं, इसको filters pane बोलते हैं, इसको report canvas बोलते हैं। Like that, from interface onwards I will start. ठीक है, once we actually start learning, I will tell you कि किसको क्या बोलते हैं. From there I will start. So don't worry at all. I'm just showing you how things work. Shrikant, you have a question? Hello, sir. Good morning. Yeah. Sir, now in the visualization bar, I can see a lot of pie chart, bar chart, and everything. Right. If someone asks me, Shrikant, the same thing can be done like pie charts, bar charts in Excel also. If we analyze the sample order, sales order, or sales data in Excel sheet, we can also get some pie chart. We can get Right. some bar chart visualizations. Correct. So what is so much different in Power BI so that we have to use Power BI instead of Excel? What's Right. the edge? Yeah. So first thing is, the main thing is Excel cannot handle huge amount of data. Okay, Excel have a limitation. It can handle maybe some 60,000 or 1 million something. Okay, not more than that one. And Power BI can handle millions of data. Okay, that is the first and most important thing. And the second thing, in Excel you cannot put lot of securities. Okay, your data is not so much secured in Excel, whereas in Power BI you can do row level security, you can do object level security, you can do report level security. So many security functions are there. Okay, you can schedule the process. आपका डेटा जो आ रहा है आप ऑटोमेट कर सकते हो, हर रोज आपको रिपोर्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है. Okay, in Power BI we can do a feature which will automatically refresh your report at a certain period of time which you provide. और बहुत सारे features है, I will tell you once we go into that one. Okay, Excel is the base. Power BI बना है Excel से ही. Okay. Okay, sir. Thanks. Yeah, but we have so many advanced features in Power BI which Excel cannot do. Okay. So hi guys. So guys, if you're not familiar with this databases, tables, and servers, we'll cover each and everything step by step. This is just to show you what Power BI is capable of. ये सारे चीज हम लोग पावर बीआई इंटरफेस से लेके हर एक चीज जो जो विजुअल किसको क्यों कौन सा विजुअल यूज करना है, डिफरेंट विजुअल्स है देयर, कब कौन सा यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. If you're not familiar, don't worry, just observe what sir is doing, what Power BI is capable of. But we'll be covering each and everything step by step. So like don't afraid कि सर के बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. या जस्ट दिखाएंगे कि when you have used data set कैसे उसको एनालाइज करके रिपोर्ट, बेसिक रिपोर्ट बना सकते हैं जिसको कि हम लोग मैनेजमेंट या सीनियर लीडरशिप को शेयर कर सकते हैं. दैट इज व्हाट सर इज शोइंग. बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉलो इट. ओके, विल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन सो फार? Nothing, sir. ओके, परफेक्ट. My intention for this session is कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग फाइनली करने क्या वाले हैं, what we are going to do finally. Okay, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आऊंगा
आप सीखोगे, बट आपका दिमाग में नहीं रहेगा कि एट लास्ट टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो आई एम जस्ट शोइंग यू कि फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उसके बाद हम आएंगे कि कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, राइट। सो आई गॉट माय टोटल सेल्स, राइट। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस वन and paste it here. And now instead of total sales, what is my second requirement? Total profit, right? So मैं sales हटाऊंगा और यहाँ पे profit ढूंढूंगा. So I have the profit, I will put it here. But मेरा title अभी भी sales ही दिखा रहा है, right? So I need to change that one. Select the visual, go to format, go to general, title पे जाओ, and then I will change it to total profit. I will copy these two things now. Just like a PPT, how you do, similar, you just need to copy this one, paste it here. Now I will change sales. What we know, we need quantity, right? Third one. So we will search for quantity column and put it here. Then again, I need to change the title. Okay. Sorry, ये वाला change करना था ना. Right. Now this one, we need discount. So I will remove this one and search for discount. And we will change the title. Okay, मेरा initial 4 requirement हो गए. This is done, right? So I will come here. I will try to इसके बीच में gap थोड़ा कम है, इसके बीच में gap थोड़ा ज़्यादा है, right? So what I will do, I will select all. I will go to format. I will go to align and I will say distribute horizontally. So it will horizontally distribution उसका अच्छा रहेगा, ठीक है? So this is done. And then next requirement, what I want, each category by sales. Okay, each category और sales मुझे चाहिए. So what are the columns required for me? Category and sales. ये दो कॉलम अगर है, I can do this one, right? So I will go and search. मेरे पास वो दो है कि नहीं? Sales तो already है, हमने देखा है. Category है कि नहीं? Category also we have. Okay. So we need to select the visual. आपको कौन से visual में दिखाना है? Okay, ये जो requirement है, आपको कौन से visual में दिखाना है? Most of the times they will tell you. End user जो आपको requirement देते हैं, they may tell you show this in the form of a pie chart. Okay, they will tell you, but sometimes they will leave it to you. अगर वो लोग को पावर बाई इतना ज्यादा पता नहीं है, वो रिपोर्टिंग वो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं. Okay, they are bringing in the new technology to use it. One second, guys. तो उनके पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है कि कौन सा विजुअल कब यूज करना है. They may not be knowing that. Then they will tell you, you are the developer, you have more experience in reporting than me. I am just the business. मुझे बिजनेस पता है, मुझे रिपोर्टिंग के बारे में इतना पता नहीं है. तो you decide कि कौन सा विजुअल अच्छा रहेगा इसके लिए. Okay, like that also they may ask. So I will tell you when to use what visuals when we start. When we start learning, at the time I will tell you कौन सा visual किसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? So let us do it in a pie chart. So what I should do? आपको जो भी विजुअल पहले बनाना है, you need to select the canvas first. आपको पहले canvas पे क्लिक करना पड़ेगा, and then you select the visual which you want to create. अगर आप canvas पे क्लिक नहीं करोगे, what is the problem you will get? I will tell you. One second. तो मुझे पाई चार्ट ऐसा चाहिए कैटेगरी वाइज सेल्स, ठीक है? मेरा कैटेगरी यहाँ पे है, इस कैटेगरी को लेके लेजेंड में डालूंगा. लेजेंड में क्यों डालना है? 10 थिंग्स एंड ऑल आई विल टेल यू लेटर. ओके, सेल्स को लाके वैल्यूज में डालूंगा. सो आई विल गेट कैटेगरी बाय सेल्स. तो इसको भी मुझे थोड़ा फॉर्मेट करना है. विजुअल सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ. आई विल से डेटा लेबल्स. जो लेबल से यहाँ पे सिर्फ नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मुझे नंबर्स नहीं, मुझे कैटेगरी का नाम भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, ठीक है? एंड देन आई विल इंक्रीज द साइज. वैल्यूज में जाके आई विल मेक इट बोल्ड, आई विल मेक इट लिटिल बिगर, ठीक है? यहाँ पे जब नाम आ गया, ये जरूरी है क्या? एनी यूज ऑफ दिस वन? नो यूज, राइट? ऑलरेडी जो ऑरेंज टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एरो मार्क आके टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, राइट?
So this is of no use now. So unnecessary ये space ले रहा है मेरा. So what I will do, I will remove that one. So what I will do, I will off the legend. ठीक है? And then title मैं यहाँ पे जाऊँगा. All these things I will tell later. Okay? Sales by category दूंगा मैं बस. And then I will say bold करो. Okay? Now it is looking better. Right? आपको border देना है, that also you can do, but generally in real time we don't give borders. Okay? हो गया आपका सेल्स बाय कैटेगरी. राइट. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपका? ईच सब कैटेगरी बाय सेल्स, बट उसमें टॉप 7 सब कैटेगरीज ही चाहिए जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट्स हो. ओके, सो इसको फॉर एग्जांपल मुझे बार चार्ट में चाहिए. राइट. सो अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा बार चार्ट है. इफ आई क्लिक हियर व्हाट विल हैपन? यहाँ पे बार चार्ट आना चाहिए. राइट. बट व्हाट इज हैपनिंग? चेक, मेरा पाई चार्ट ही कन्वर्ट हो जा रहा है. राइट. वाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आपको पहले कैनवस पे क्लिक करना पड़ेगा, किसी को सेलेक्ट नहीं करना है. ओके, पहले यू नीड टू रिमूव योर सिलेक्शन, देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन. ओके, अगर सिलेक्शन है वो ओवरराइट हो जाएगा. ठीक है. राइट. सो I will take this one. क्या चाहिए हमें? Each सब कैटेगरी और उसका सेल्स चाहिए, बट उसमें से ओनली 7 सब कैटेगरीज चाहिए जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट्स होना चाहिए. तो हमें कौन से कॉलम चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए? We Profit require चाहिए, the category, profit and sales. सब कैटेगरी चाहिए, सेल्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. ओके, इफ आई हैव these 3 I can do it. राइट. सो वी विल गो एंड सर्च कि कैटेगरी ऑलरेडी था हमारे पास, सेल्स ऑलरेडी है, सब कैटेगरी है कि नहीं, दैट वी नीड टू चेक. सो आई हैव द सब कैटेगरी आल्सो. ठीक है. तो मुझे दिखाना क्या है? सब कैटेगरी एंड उसका सेल्स दिखाना है. विजुअल में क्या दिखाना है? सब कैटेगरी एंड उसका सेल्स. So I will go here and I will take subcategory in the y-axis and sales in the x-axis. तो मेरा each subcategory उसका सेल्स आ रहा है. ठीक है. इसका नंबर्स में ऑन कर दूंगा, फॉर्मेट में जाके डेटा लेबल्स ऑन. ठीक है. x-axis में अगर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करना है, सॉरी ये y-axis है ना, y-axis में करना है तो y-axis में जाऊंगा and I will make it bold. ओके. राइट. टाइटल भी सम ऑफ मुझे नहीं चाहिए, so I will go to title and remove the sum of sales by subcategory and let's make it bold. ठीक है. हमने क्या किया अभी? we have shown subcategory and sales. This is done. उसके बाद क्या करना है हमें? only top 7 subcategories दिखाना है. Okay, with highest profits. मतलब we need to apply some filter. Okay, सारे नहीं दिखाने हैं, only top 7 दिखाने हैं. So I need to apply some filters. So now you need to know the filters. Okay, filters कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे filters होते हैं. ठीक है. तो इस विजुअल, कौन से विजुअल पे फिल्टर अप्लाई करना है? इस विजुअल पे अप्लाई करना है. So I will select the visual, filters on this visual, सब कैटेगरी, इसके सब फिल्टर्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे something top n is there. So I will go to the top and I will say I want to see the subcategory top 7 items. ठीक है. मुझे top 7 ही दिखाना है. Based on what? Based on profit. तो ये जो बाई वैल्यू है यहाँ पे मुझे प्रॉफिट को लाके डालना है. ठीक है. एंड देन अप्लाई द फिल्टर. या Sir, what does the top n refers to? टॉप नंबर ऑफ आइटम्स. एन मतलब टॉप कितना चाहिए. Okay, sir. Okay, right. We will go to filters. When we discuss about filters, I will tell you in detail. तो यहाँ पे अभी नंबर काउंट करो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7. राइट. हाँ, जब वेयर कंडीशन लिखते हो ना एसक्यूएल में, इट इज सेम. ओके, आई विल टेल यू दैट लेटर ऑन. ठीक है. सो यू हैव नाउ व्हाट यू गॉट द टॉप 7 subcategories and sales, but the name of the subcategories are those who are giving us highest profits. ठीक है. Right.
Let's make it So one simple. more doubt. Sort of sales, we will keep it here. Okay, based on sales only, I want to show it. Okay, yeah. So one more doubt. Yes. Sir, as we saw that in those bar charts, the sales number has been given, Hmm. that how much sale has been done. Sir, can we put the profit percent? Can we put what? Sir, percentage, can we put the percentage of how much sale has been done from 100%? Yeah, we can do that. You need to write a measure for it. Okay, okay, sir. Okay, so for that we need to know how to create a measure. There is a language called DAX. So when we learn Okay. that one, I will tell you how to create the percentage. Okay, sir. Okay, right. So what we got now, each subcategory, uska sales kya hai, and what are the subcategories which are giving me highest sales. Only I am taking sales only, not profit. Okay, we will keep it simple. Next, what is the next one? Each segment and sales. तो हमें कौन से कॉलम चाहिए? सेगमेंट चाहिए, सेल्स चाहिए. तो है segment भी चाहिए. So sales already we have. We will search. We will have whether we have the segment or not. We have the segment. I want it in a, for example, donut chart. Okay. So what I will do, I will come here and select the donut chart. ठीक है. सेगमेंट को लाके लेजेंड में डालेंगे, सेल्स को लेके वैल्यूज में डालेंगे. बट यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग किया है वही फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है. इंस्टेड ऑफ गोइंग डू एंड स्टेप बाय स्टेप अगेन, what I will do, I will select this, click on format painter and just drop it here. So जो भी formatting हमने किया automatically that will be applied here. Excel में you have already seen format painter, right? If you have seen, it is the same work. Okay, so segment wise sales आ गया. Heading थोड़ा change करना है. So I will come here and I will say sales by segment. Right? Next, what we have, region by revenue. So what are the columns we need? Region and revenue. So I will go to region. ये मेरा region है. I want revenue. I don't have revenue. What to do now? We have to create up. Revenue नहीं है. What we should do? One answer I got is we need to create. Any other answers? I will, अगर मैंने आपको रिक्वायरमेंट दिया है, आपने बनाया हो, नेक्स्ट डे जब आप कॉल पे आओगे, आई विल टेल यू रेवेन्यू बाय सेल्स रीजन कहाँ पे है. मैंने दिया था ना आपको रेवेन्यू बाय, सॉरी, रीजन बाय रेवेन्यू बनाने के लिए क्यों नहीं दिख रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या बोलोगे? I'll tell that there is no data set available for that. So what you will do? We can ask for the data set to them, for the revenue data. You need to ask. आप रेवेन्यू बोले थे, रेवेन्यू कहाँ मिलेगा मुझे? आपने जो डेटा सेट दिया वहां पे रेवेन्यू नहीं है मेरे पास. You need to ask. Until unless you ask, you will not get it. I told you first itself. Do not assume anything. Okay? You need to ask. अगर रेवेन्यू बोला है, you need to ask. रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का मतलब क्या है? जो आपके पास सेल्स वगैरह है उससे कैलकुलेट होगा या फिर रेवेन्यू एक नया कॉलम आएगा? अगर जो डेटा है उसी से कैलकुलेट करना है, उसका लॉजिक क्या है? आपको मुझे लॉजिक देना पड़ेगा ना. रेवेन्यू मतलब क्या है? सेल्स बाय ओवरऑल सेल्स है या फिर क्या है? यू नीड टू गिव मी द फॉर्मूला. अगर इफ यू गिव मी द फॉर्मूला, आई मे ट्राई टू क्रिएट इट इन माय पावर वे. क्रिएट इज आल्सो गुड आंसर, बट क्रिएट करने के लिए हमारे पास लॉजिक चाहिए. राइट? मैं आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फाइंड आउट करने को बोल दिया. कैसे फाइंड आउट करोगे? मुझे लॉजिक बताना पड़ेगा ना. आई नीड टू टेल यू, मेरा बिजनेस है, so I need to know what logic needs to be applied there. Even though you know the formula, still you should ask and get it confirmed. Year over year growth का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस इनटू 100 करने से आ जाएगा. बट स्टिल यू नीड टू गेट द कंफर्मेशन. आपको फॉर्मूला पता है
Still you need to get the confirmation कि आपने मुझे year over year growth calculate करने को बोला. This is the formula I am thinking. Is it correct? Please confirm. वो जब confirm करेंगे, हाँ, this is the formula, you need to apply that. If they say no, this is not, there is a different formula, then give me the formula. Okay? क्योंकि आप मेहनत करके कंप्लीट कर दोगे, बाद में बोलेगा नहीं नहीं ये फॉर्मूला गलत है, आपको किसने दिया था? किसी ने नहीं दिया था, तो आपने क्यों कंप्लीट कर दिया? राइट? तो यू नीड टू आस्क. अगर रेवेन्यू नहीं है, यू नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन. रेवेन्यू बाहर से आएगा या फिर जो डेटा है उसी से मुझे कैलकुलेट करना है. Okay? Based on that, you need to do that. So we are not going to do this now because we don't have the data. Maybe I need a slicer. So I will take a slicer visual from here and I will put the region. Okay, so this is my report. और भी कुछ है तो then we can develop those things also here. For example, मुझे yearly sales चाहिए. So I will take the order date from here. I want only yearly, so I will take out all these things and then sales. So this is my yearly sales. Okay, like this I will develop my report. So मेरा report development हो गया. Okay, report development होने के बाद you need to do one more thing. ये जो numbers आ रहे हैं ये सही आ रहे हैं कि गलत आ रहा है? Okay, you need to. One question. Yeah. Actually, means this total numbers that we are, the total numbers that are showing on this sheet, they refer to both Canada and USA, right? This So is we the can give overall data. Means आपके data set में जो भी है, सारे country, सारे region, सारे categories, सबको मिला के this is the sales. So we can give a filter to all this. I mean, if we want to see only the Canada numbers and all. You can do that. Yeah, based on the requirement. अगर आपको यहाँ पे सिर्फ कनाडा का सेल्स दिखाना है, सिर्फ इसी में दिखाना है या पूरा रिपोर्ट में दिखाना है? अगर सिर्फ इसी विजुअल में आपको सिर्फ कनाडा का सेल्स दिखाना है, यू कैन डू इट इन मल्टीपल वेज. वन इजीएस्ट वे इज आई विल टेक द कंट्री, यहाँ पे है, इसको फिल्टर में डालूंगा एंड आई विल से ओनली कनाडा. सो इट विल शो मी ओनली कनाडा डेटा. ओके, दिस इज वन वे. और एल्स आई कैन डायरेक्टली राइट ए मेजर. ओके, मैं एक मेजर लिखूंगा, न्यू मेजर करके, कनाडा सेल्स इक्वल टू calculate sum of sales, comma, filter मेरा होगा country is equal to. Okay, now I will remove whatever I have used from here and take the one which we have created. We can do it in multiple ways. ये I will tell you, but पहले आपको वहां तक जाने के लिए पावर BI का इंटरफेस क्या है, कहाँ पे क्या है, वो सब आपको जानना है. ठीक है, I cannot go to the मतलब advanced level at a time. Okay, so you can do it. Okay, आपको जो भी दिखाना है, जैसे भी दिखाना है, everything we can do it. क्या श्रीकांत? कैनवस है जो व्हाइट कलर कैनवस दिख रहा है एंड हाँ. आई कैन सी डॉटेड बॉर्डर लाइन जो पाई चार्ट के पास पूरा Right. बॉर्डर लाइन एक गया है. सो इज देयर एनीथिंग लाइक हम इसी के अंदर करना है या कैनवस को थोड़ा Yes. बढ़ा सकते हैं? But yeah, you can customize it. For example, you want to increase the size of this canvas. Generally, this is the perfect size for a report. But for some reason, you want to put it under. इसके नीचे भी आपको कुछ रखना है. And you need a scroll bar here कि आप नीचे भी जा सकते हो. If you want to do it, then you need to customize this one. What you need to do, you need to go to canvas settings. Type में यहाँ पे custom डाल दो and you can adjust the size. For example, यहाँ पे मैं 1500 डालूंगा height. So it will be, you will get a more space where you can build other visuals also. Okay, height and width you can change from here, but I don't recommend to do that. Okay, but color will be white. That's a defined thing.
Yeah, this is the defined one. If you want more pages, you can keep adding here. You can add any number of pages here. Like an Excel, you added sheets, right? Like that, you can add any number of pages if you want to show more visuals. Okay. Okay, till now, any questions? All good? Yes, sir. Right. So उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? Once you have created the report, you need to do the testing. Okay, real time में आपको testing करना पड़ेगा. Okay, you may do it or data engineer can also do. Most of the time they will do, but you also need to know the knowledge. अगर वो नहीं है, you should be able to do by your own. Okay. अगर if you are in a small company where they don't have a budget to hire one more resource for testing, they may ask the developer itself to do the testing. Okay, most of the time you will not be doing, but in interviews they will ask you related to those things also. Okay, even if you don't do also, you need to know. So for example, अभी ये जो numbers आए हैं, ये सब correct है या गलत है? That I want to know. For example, I will show you for something, maybe this one, sales by category. Okay, so ये कहाँ से आ रहा है data? SQL server से आ रहा है. So I will go to SQL server. So यहाँ पे you need to write the SQL query. SQL का काम क्या है? If you are as a data analyst या फिर Power BI developer, जो भी आपका position है, if they are using Power BI as a data analysis tool, so आपका SQL में काम क्या होगा? Once you develop the report, you will be writing the SQL queries here to test it. For example, select star from orders. तो ये मेरा orders table है जो हमने pull किया था. मुझे क्या देखना है अभी कि each category का sales क्या आ रहा है. So while testing, what I will do, I will convert this into a table. Okay, एक छोटा सा टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा. ठीक है, दिस इज माय ईच कैटेगरी एंड इट सेल्स. ठीक है, सो सीक्वल में भी वही मुझे आना चाहिए. तो इफ आई से कैटेगरी कॉमा सम ऑफ सेल्स एज सेल्स. How to write this I will tell you later. When we go to that level I will tell you. Okay, now when I execute this one, you see around okay, office supplies कितना आ रहा है? 719182. Furniture 741998. Technology 836. Right? Are we getting the same number? Okay, this is in a different order. If I want to change the order, I can change it. Okay, office supply 719, furniture 741, technology 836. Exactly same, right? So you need to, आपका SQL का मेन काम यही होगा. इसको भी डेटा एनालिसिस ही बोलते हैं. ओके, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग पावर बीआई, यू वांट टू एनालाइज इन एक्सेल इटसेल्फ, सॉरी SQL इटसेल्फ, so you need to know how to write the SQL queries. Okay, for every requirement. Okay, जो भी हमने पावर बीआई में किया है, exactly same thing we can do it in SQL also. पावर बीआई में you can create different charts, where in Excel you will get a simple result. Sorry, SQL में. ठीक है, तो हर एक विजुअल का आपने जो यहाँ पे बनाया है उसका टेस्टिंग आप करोगे बाय राइटिंग SQL queries in SQL, and this number should match with that number. अभी फॉर एग्जांपल select profit. Okay, so ये जो नंबर आ रहा है 286, that should come here also. Okay, 286397.02. Imagine. So like this you need to do the testing. आपको जो भी वहां पे बनाया है exactly same query you need to write it here and you need to testing कि मेरा database से जो numbers आ रहे हैं
वही मैं दिखा रहा हूँ पावर बीआई में या कुछ और दिखा रहा हूँ? आप जब पावर बीआई में ड्रैग ड्रॉप करोगे इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो। ओके, एक फिल्टर आपने मिस कर दिया कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर दोनों जगह पे सेम नंबर्स आ रहे हैं दैट मीन्स आवर टेस्टिंग इज डन, डेवलपर का टेस्टिंग डन। देन व्हाट वी विल डू, वी विल पब्लिश दिस रिपोर्ट। इसको क्या करेंगे, हम पब्लिश करेंगे। वी विल सेव दिस वन। Somewhere you can save. I will save it in your folder. Then आपका पावर बेस सर्विस विल कम इनटू पिक्चर। ओके, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट द लाइसेंस एंड ऑल। कैसा होगा आई विल टेल यू लेटर। तो वी हैव सो मेनी वर्क स्पेस। उस कंपनी के अंदर जितने सारे वर्क स्पेसेस होंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, जो प्रोजेक्ट में आप काम करोगे उसका एक अलग सा वर्क स्पेस होगा, उसके 3 अलग होंगे, डेव, यूएटी एंड प्रोडक्शन करके 3 अलग अलग होंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पब्लिश करना है, वी विल सेलेक्ट दैट फोल्डर, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट करके वी विल क्लिक ऑन सेलेक्ट। सो वी आर पब्लिशिंग द रिपोर्ट टू पावर बेस सर्विस, जो कि क्लाउड बेस है। ये जो अभी तक हमने किया है हमारा लोकल में किया है, ठीक है। इसको हम शेयर करना मुश्किल है। इफ आई वांट टू शेयर इट विद समबडी सिटिंग इन यूएस, कि कहीं और आई वांट टू शेयर इट विद 1000 मेंबर्स या 10,000 मेंबर्स, तो मेरा डेस्कटॉप में जो बना है दैट आई कैन नॉट शेयर। ओके, दैट इज ए फाइल, वी कैन नॉट शेयर। सो वंस आई पब्लिश दिस वन, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसको वो लिंक शेयर करना है app.powerbi.com में जाके। आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स लेटर। ओके, वी हैव पब्लिश हियर, राइट। तो यहाँ पे डेमो का पब्लिश हो गया, राइट। सो ये अगर ओपन करूंगा, वहां पे जो था यहाँ पे वही दिखेगा, हमने जो बनाया था वहां पे द सेम थिंग विल शो हियर आल्सो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल शेयर दिस वन। ओके, ये लिंक हम उनके साथ शेयर करेंगे। तो वो लिंक वो जब ब्राउजर में ओपन करेगा, एग्जैक्टली इट इज द सेम रिपोर्ट, इट विल बी विजिबल टू हिम। Okay, so anybody sitting any place in the globe, they will be able to access this report. इस रिपोर्ट को देख के उसको नंबर्स क्या है क्या नहीं है उसको इंटरैक्ट करना है, उसको चाहिए सिर्फ ईस्ट रीजन का, so he will select east, only east region data will come. He will say east and west दोनों को चाहिए, so he will see both the regions data. Okay, like this उनका रिक्वायरमेंट जो भी होगा उसके हिसाब से हम डेवलप करके उनको दे देंगे। Then he will do the analysis from his side. रिपोर्ट में नंबर्स जो देखने हैं वो देख के he will make the decisions which is required. ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमें करने पड़ते हैं, लाइक यू नीड टू डू द डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, यू विल लीव, समबडी एल्स विल कम, उसको पता नहीं आपने क्या बनाया हो। सो देयर शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे सब कुछ लिखा होगा कि आपको कौन सा डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट किए हो, व्हाट टेबल्स यू हैव कनेक्टेड, व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशंस आपने किया, मतलब क्लीनिंग के लिए आपने क्या किया है, क्या नए मेजर्स बनाए हैं, कौन से विजुअल्स बनाए हैं, कौन से विजुअल्स में आपने फिल्टर लगाया है, कौन से वर्क स्पेस में आपने पब्लिश किया है, किसको किसको एक्सेस दिया है, वो सारे इंफॉर्मेशन यू नीड टू पुट इट ऑन ए डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो यू नीड टू एक्सप्लेन देम। आपको केटी देना पड़ेगा। केटी मतलब क्या होता है, नॉलेज ट्रांसफर। यू नीड टू गिव द नॉलेज ट्रांसफर टू द न्यू पर्सन हु इज कमिंग, क्योंकि उसको हैंडल कर रहे हैं आपके बाद। सो वंस यू कंप्लीट दिस एंटायर साइकिल, देन योर रिपोर्ट डेवलपमेंट इज डन, देन यू विल बी मूविंग टू अनदर प्रोजेक्ट। या फिर इसी में ही और एनहेंसमेंट आएंगे, वो बोलेंगे अभी तक ये ठीक है, मुझे और एक पेज चाहिए, उसमें कुछ और नया रिक्वायरमेंट देगा, उसको क्या बोलते हैं, एनहेंसमेंट। रिपोर्ट बन गया है, पीपल आर स्टार्टिंग यूजिंग इट बट दे वांट सम चेंजेस। वो बोलेगा ये कलर अच्छा नहीं है, इसको चेंज करो, ये विजुअल अच्छा नहीं है, इसको चेंज करो। So those are small enhancements will come. That will also will come in development only, but we call it as an enhancement project. Okay, any questions? Sir, what is the difference between developer and analyst? Developer and Analyst, data analyst, and Power BI developer. no, it is same. You joined little late. No, I'm checking that. You join on time, because initially only I told there will be names will be different. ओके, आपका डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल हो, कंसल्टेंट हो, व्हाट वी कॉल डेवलपर हो, पावर बाई डेवलपर हो या एप्लीकेशन डेवलपर हो, द नेम्स विल बी डिफरेंट बट योर वर्क विल रिमेन द सेम।
Okay, fine. Sir. As I gave you example, I have from the in the day already I have around 10 plus years of experience, but I worked on the same tool, same Power BI, same SQL, same Excel, same ही यूज करता हूँ, मगर मेरा डिजिग्नेशन पहले डेटा एनालिस्ट था, फिर सिर्फ एनालिस्ट था, फिर कंसल्टेंट था, अभी एप्लीकेशन डेवलपर है. So it depends on the company where you are working. Okay, right? Any other questions? Hello. Kirod, 1 second, I am getting a question offline, then I will come to you. Yeah. किसमें? एक्सेल में? एक्सेल में मतलब नहीं समझा. हाँ हाँ कर सकते हो. जब एक टेबल है, अगर आप फॉर एग्जांपल 3-4 टेबल यूज कर रहे हो, एक टेबल से कैटेगरी आ रहा है, दूसरे टेबल से सेल्स आ रहा है, तीसरे टेबल से प्रॉफिट आ रहा है, वैसे आ रहा है, then Excel will be a little difficult. You need to write so many VLOOKUPs. Okay, जब SQL में करोगे you need to use joins. That will be easier. Okay, मतलब ये मैंने बहुत ही सिंपल दिखाया, एक ही टेबल यूज करके दिखाया, डेटा मॉडलिंग यूज नहीं किया, जॉइंट्स यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया. बट रियल टाइम में यू विल बी यूजिंग 4-5 टेबल्स एंड ऑल, तब आप एक्सेल में करना मुश्किल है. और अगर आपके डेटाबेस से आप जो कनेक्ट करते हो वहां पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, एंड एक्सेल में आप वही टेस्ट करना चाहते हो, वो हैंग हो जाएगा. ओके, इफ यू राइट ए सिंपल सम फंक्शन आल्सो, एक्सेल विल हैंग. It cannot handle that much of data. So there are some limitations in Excel. Okay. सर अगर मल्टीपल डाटा सोर्स से आया तो डाटा? Yeah, that also you can take it. आपका एक टेबल ऑरेकल से आ रहा है, एक टेबल एक्सेल से आ रहा है, एक टेबल सीक्वल से आ रहा है, you can do it. You can bring all the data into Power BI and you can do it. But in real time practice and all, you will have maximum 2 data sources. एक ही होता है. In some cases छोटा मोटा डेटा उनका एक्सेल में है, एक्चुअल डेटा उनका सर्वर में है, बट टीम साइज हो गया या फिर एम्प्लॉयज का कुछ डेटा एक्सेल में है, so you may have to bring that data also. So you may be using 2 different sources, but 99% of the cases it will be a single source. I will tell you how to bring data from Excel, how to bring data from SQL Server. एक ही रिपोर्ट में दोनों जगह से कैसे लाके करेंगे, all those things I will tell you. Okay, today's session was just to give an idea आपको requirement कैसे आता है, what kind of questions you may have to ask, हम development कैसे start करते हैं, Power BI में कितना easy होता है develop करना, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, उसको पब्लिश कैसे करते हैं, उसको शेयर कैसे करते हैं, मतलब एंड टू एंड स्टार्टिंग से एंडिंग क्या करते हैं, एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन अ वेरी क्रिस्प वे. ओके, एक्सप्लेन मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बट ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए एक्चुअली मुझे करना क्या है. इफ दैट इज क्लियर, टुडे सेशन इज सक्सेस. एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. I have one question. Yes. As a beginner, which tools and like programming language we should like I should learn? Because most of the time there is a YouTubers who is like recommending to learn Pythons, R, and everything. What is your perspective? Like, See, tomorrow I will tell you what are the different roles you will find. Okay, पूरा आर्किटेक्चर आई विल टेल यू कि डेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, उसके बीच में कौन से टीम्स इन्वॉल्व होते हैं. डेटा इंजीनियरिंग टीम इन्वॉल्व होगा, डेटा एनालिस्ट टीम इन्वॉल्व होगा, बिजनेस एनालिस्ट टीम इन्वॉल्व होगा, डेटा साइंस टीम इन्वॉल्व होगा. यही 4 होते हैं पूरा डेटा में. ठीक है. सो डेटा इंजीनियरिंग के लिए यू नीड टू नो सीक्वल एडवांस लेवल, मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल में यू नीड टू नो, दैट इज 1. उसके बाद यू नीड टू नो सम ETL टूल्स, जैसे आपका SSIS हो गया, ADF हो गया, डेटाब्रिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे, इन्फॉर्मेटिका हो गया, बहुत सारे ETL टूल्स होते हैं. यू नीड टू नो दैट टू गेट इनटू डेटा इंजीनियरिंग. डेटा एनालिस्ट में जाने के लिए यू नीड टू नो एक्सेल, यू नीड टू नो पावर BI, यू नीड टू नो लिटिल मीडियम टू थोड़ा ऊपर सीक्वल आपको चाहिए. उसके बाद पाइथन चाहिए. पाइथन में सब कुछ नहीं, आपको पांडास और नमपाई. Okay, because those are the 2 things which is used for data cleaning and data analysis के लिए. Okay, इतना सारे चाहिए आपको डेटा एनालिस्ट रोल के लिए. डेटा साइंस रोल के लिए you need to be very advanced in the program. It can be Python, it can be R programming या कुछ और. You need to be very good at the programming. So when you are entering into IT field, out of all those things, the easiest one is data analysis. Okay, data engineering
सीख सकोगे, बट आपने एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम किया वो प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रियल टाइम में बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं, ओके, विच विल बी आपको मतलब फुल लोड करना है, इंक्रीमेंटल लोड करना है कि कैसे करना है, स्टोर प्रोसीजर्स बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं। तो रियल टाइम में डेटा इंजीनियरिंग थोड़ा समझाना इनिशियल में इट विल बी डिफिकल्ट। यू कैन लर्न इट बट द इंटरव्यू क्वेश्चंस यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। डेटा साइंस और भी डिफिकल्ट है, ओके, आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है, ओके। सो इन प्रोग्रामिंग इनिशियल एंट्री पर्पस आई विल टेल डेटा एनालिस्ट इज द वन विच इज मच मोर इजियर। आपको रिपोर्ट बनाना है, सिंपल रिपोर्ट्स आपको बनाना है, जो रिक्वायरमेंट मिला है जैसे हमने बनाया, मतलब इतना सिंपल नहीं होगा, बट वी नीड टू क्रिएट इट। Once you get into data analyst profile, maybe 3 years or 2.5 years if you work there, उस 2 साल में you will get an idea about the data engineering और data science के बारे में आपको idea आ जाएगा, क्योंकि data engineering से ही आ रहा है, so you will be always in contact with that person. So once you get to know all the things, basics real time में कैसा हो रहा है, then you are interested. You want to go to data engineering, you want to go to data science, it is up to you. Once you have the basic of data analyst, okay, उसके बाद data engineering आपने सीख लिया, data engineering और data analysis दोनों आपको आता है, then you can become an architect. Okay, architect का काम क्या होता है? He will just design कि data sources क्या है, उसमें से मुझे data prepare कैसे करना है, कितने layers बनाने हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ओके, आई विल टेल यू टुमारो। तो वो कैसे डिजाइन करना है, उसके बाद पावर बीआई में कैसे लाना है, उसके बाद रिपोर्ट कैसे बनाना है, वो डिजाइन करके छोड़ देगा। उसके बाद जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं उसका डिजाइन देके दे विल बिल्ड ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो टू बिकम ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट यू शुड बी कॉन्फिडेंट विद डेटा एनालिसिस आल्सो, डेटा इंजीनियरिंग आल्सो, okay। Data science, it's about mostly about the programming part, prediction part, वैसा। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए जो डेटा चाहिए वो भी डेटा इंजीनियर ही देगा, उसको भी डेटा चाहिए, राइट। ही वांट्स टू प्रिडिक्ट इट, जो 5 साल का डेटा है उसको लेके नेक्स्ट 5 साल क्या होने वाला है, दैट ही विल बी प्रिडिक्टिंग। उसको डेटा चाहिए लास्ट 5 साल का, वो कौन देगा? डेटा इंजीनियर को ही बना के देना पड़ेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Sir, if someone want to stay or want to make his career in data analyst, so it's possible, or do you need to change after 4 5 years or 6 years of No, experience not after required. in No, not no, required. Okay. not required. It's up to you. Hmm. It's up to you. Okay. Okay. Yeah. But you will automatically get that interest. आप 5 साल 6 साल आप डेटा एनालिस्ट में काम करने के बाद आपको खुद को लगेगा कि यार डेटा इंजीनियर भी सीख लेते हैं, ओके, बिकॉज यू विल बी लाइक मैं बहुत कर लिया अभी, लेट्स डू समथिंग एल्स, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। Yeah. So, sir, another one query I have. So, suppose already I am having here about 10+ year experience in IT. So, I want to transfer from the data analyst. So, it's not possible, right? Can you ask again? You have already some 10 years of experience and in different technology. Now you want to move to a data analyst. Yes. Yes. Yeah, that is possible. But the thing is, like, you need to tell, for example, you have 10 years of experience. You should not tell कि आपका 10 years मतलब data analyst में ही है. You should No. tell No. initial 6 years or 7 years you were working in different thing, whatever you are doing that you tell. And the last 3 years or 4 years you were into data analyst. अगर आप 10 साल या 7 साल बोल दोगे डेटा एनालिस्ट में, स्टिल यू विल गेट द रोल, बट यू विल गेट ए मच हायर रोल, जहां पे आपको बहुत कुछ मतलब सुपरवाइज करना पड़ेगा। जूनियर्स को जो नहीं आता है उसको आपको सिखाना, मतलब यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ओके। सो यू नीड टू गो एज ए लाइक आप 3 4 साल से कर रहे हो, once you gain that experience then you can move forward. Yeah. Sir, is there any packages difference between data analyst and data engineer? No, it all depends on what is your previous package and what is how many years of experience. वो सब बजट, उनका प्रोजेक्ट का बजट के ऊपर डिपेंड करता है। Okay. But on an average, if you ask me, if you are a fresher like 2 years के अंदर को fresher ही बोलते हैं, तो 2 years experience something you are having, you can expect somewhere around 5 to 6 lakhs. If you are having around 5 years of experience, you can expect around 10, 11 and all. Generally, number of years of experience multiplied by 2.5.
ओके आपका 5 years एक्सपीरियंस है 5 into 2.5 For example, if we have a 10 plus year of experience into IT and we have more than 10 lakhs in the package, so how much we can expect for the you same? can expect around 30% on your current Okay. पूरा 5 साल आपको डेटा एनालिसिस में दिखाने की जरूरत नहीं है ओके इफ if you are already having some experience then majorly your current salary is the factor आपका करंट सैलरी क्या है उसके ऊपर यू कैन नेगोशिएट अगर बहुत ही कम है यू कैन एक्सपेक्ट 60% 70% 100% हाइक ऑल्सो आपका ऑलरेडी हाई है देन यू कैन एक्सपेक्ट ओनली 30% ओके आपका करंट सैलरी अगर ऑलरेडी 7-8 लाख है देन यू कैन एक्सपेक्ट 30% आपका करंट सैलरी 2-3 लाख ही है देन यू कैन एक्सपेक्ट यू मेक इट 10 समथिंग लाइक Sir, as per the industry standard, entry level data analyst salary, like how much? around 5 close to 5 Yeah. ओके मतलब जो फ्रेशर होते हैं 1-2 years एक्सपीरियंस अभी लास्ट बैच देयर वाज ए गर्ल ओके शी वर्कड इन टीसीएस फॉर 1.5 year उसने कॉलेज के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट में गई थी 1.5 year देन शी मूव टू विप्रो और इन्फोसिस समथिंग ओके so when she was in TCS her salary was around 2.5 lakhs when she moved to Wipro she got 8 lakhs just 2.5 years का एक्सपीरियंस है इट्स ऑल डिपेंड्स की मतलब आपका स्किल क्या है दे विल आल्सो सी द स्किल इफ दे फील दैट आपका स्किल के लिए दे नीड टू पे सम 10 lakhs or else you will not stay you will change immediately right so it sometimes depends Sir, okay sir, yeah currently I am working as a Power Apps developer. right Sir, if I want to switch to Power BI, then it will be much easy for you know if you are creating apps power apps so already you might be in contact with power BI team right आपकी टीम में कोई power BI है नहीं सर हम लोगों का ओनली पावर एप्स ही है छोटा स्टार्टअप है ओके ओके सो जनरली ना मतलब पावर प्लेटफॉर्म के अंदर पावर बीआई आता है पावर एप्स आता है पावर ऑटोमेट आता है डेटावर्स आता है यस सर ठीक है आउट ऑफ दीज थिंग्स पावर एप्स पावर ऑटोमेट जनरली पीपल विल आस्क अगर आपको पावर एप्स आता है दे विल आस्क पावर ऑटोमेट आल्सो यस सर ओके पावर या करेक्ट पावर बीआई इज डिफरेंट ओके पावर बीआई का लाइसेंस अलग होता है पावर एप्स का लाइसेंस अलग होता है जी सर ठीक है तो बट यू कैन स्विच इट दैट शुड नॉट बी मच प्रॉब्लम क्योंकि पावर ऐप में आप क्या क्या कर रहे हो यू आर क्रिएटिंग ए ऐप फ्रॉम वेयर यू आर राइटिंग बैक द डेटा टू डेटाबेस यस सर ओके पावर बीआई का काम क्या होता है डेटाबेस को आपने जो भेजा है वो उसको कनेक्ट करके बाहर दिखाना होता है जी सर ठीक है तो इट इज सिमिलर ओनली ओके मच नॉट मतलब डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट स्विचिंग शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम इट विल बी वेरी गुड एक्चुअली पावर एप्स अगर आपको आता है पावर एप्स पावर ऑटोमेट आता है एंड यू आर लर्निंग पावर बीआई देन इट इज वेरी गुड एक्चुअली Sir, even currently I am at very low, like 3.6. How can I have 3.4 years experience. How right can I expect how much? what is your current package 3.6, sir. how much years of experience 3.4. okay with 3.4 years experience you have around 3.6 package Yes, sir. okay you can expect if you know power BI easily you can expect somewhere around 10 or little more also in between 10 to 12 Okay, sir. पावर एप्स पावर बीआई पावर ऑटोमेट अगर आपको आता है जी अगर मतलब इफ यू वांट टू गो टू मतलब अच्छे से अगर आता है यू कैन गो टू 15 आल्सो सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरा एजुकेशनल गैप थोड़ा ज्यादा है टीसीएस ये सब तो कंसिडर नहीं करेगा ना टीसीएस एक ही कंपनी नहीं है ना सर टीसीएस एक ही कंपनी थोड़ी ना है हमारे पास वी हैव हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज व्हाई यू आर टारगेटिंग टीसीएस टीसीएस विल नॉट गिव यू अ गुड पैकेज यस सर हाँ टीसीएस नहीं देगा आपको ठीक है यू शुड नॉट कंसिडर टीसीएस इन योर इनिशियल करियर फॉर श्योर मेरे पास 2-3 बार टीसीएस आया था कॉल मतलब फॉर इंटरव्यू एंड ऑल आई डिडंट अटेंड व्हाई बिकॉज वंस आई गो इनटू टीसीएस एंड कम आउट ऑफ टीसीएस आई कैन नॉट गो अगेन
TCS Yes, का sir. रूल क्या है, once you resign you cannot go back. यस सर. तो सर एजुकेशनल गैप कुछ मैटर नहीं करेगा. नहीं, आपका रीसेंट 2 साल, अगर 2-3 साल आपका है, देन आईटी में मेरा कंटिन्यूइंग है. हाँ, दैट्स ओके, दैट डजंट मैटर. आपका पहले गैप अगर है, दैट डजंट मैटर. See, if you have more than 5+ years of experience, then they'll not be looking at your gaps. They will not look your gap, they will not look into your marks, scores, percentage. कुछ नहीं देखेंगे. Okay, only few companies like TCS are there which they want career first class, ऐसा कुछ चाहिए होता है. But डिफरेंट फील्ड में होगा, मतलब आईटी में ही नहीं होगा. एक्सपीरियंस मतलब बहुत बार काम कर राइट, यू विल शो. आप क्या करोगे, यू विल शो इट. फॉर एग्जांपल मेरा खुद का केस है. आई वाज आल्सो इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग इन इनिशियल 2 years. मगर मैं जब मूव किया, व्हाट आई सेड, वो जो 2 साल मैंने वहां पे काम किया, इवन तो आई वाज डूइंग सेल्स, आई वाज डूइंग डेटा एनालिसिस. मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स थे, बहुत सारे डीलर्स थे, बहुत सारा डेटा था मेरे पास. तो आई वाज डूइंग डेटा एनालिसिस देयर ओनली. So they will ask their questions. उनका प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए, those related questions they will ask. If you are able to answer, they will take you. उनको फाइनल क्या चाहिए, उनका काम आप कर सकते हो कि नहीं. जी सर. they are like that, and I have to portray my Correct. story like that. You have Correct. to portray your story. Correct. Yes. Exactly. You need to portray कि you already worked on the same tool in a different domain. जी मेरा सर. designation अलग था, मगर काम सेम ही था. Okay. In that way, you need to portray. See guys, we have companies like Wipro, TCS, HCL, जो Indian IT companies है. Yes, sir. They will be looking at your qualification, gap, ये वो सब देखेंगे. But इनको छोड़ के ना, there are more than 50,000 companies in India. In Bangalore itself, startup से MNC तक देखोगे तो more than 55,000 companies registered. तो वो 10 companies में नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना उनको. There are other companies. See, I being from arts background, see my background is arts, so I have got offer from UBS, Swiss Bank. मतलब TCS आर पार ही नहीं आ सकता, आस पास ही नहीं आ सकता in terms of salary. TCS 10 लाख भी ऑफर नहीं करेगा, जहाँ पे स्विस बैंक आपको 25-30 लाख इजीली ऑफर करेगा. एक्सेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया. देयर आर मेनी इंटरनेशनल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बहुत सारे कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है. वहां पे तुम अप्लाई करो ना. अभी TCS छोड़ दो, TCS, विप्रो, इन्फोसिस ये पैसा पे ही नहीं कर पाएंगे तुमको. ठीक है, तो इसीलिए डोंट वरी अबाउट योर ईयर गैप. मतलब ओनली थिंग इज आप अभी काम कर रहे हो कि नहीं. अभी अगर काम कर रहे हो 2 to 3 years एक्सपीरियंस यू कैन शो, दैट इज मोर देन इनफ. प्रीवियस गैप का बता सकते हो, कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहा था. They will not ask also. Previous gap generally they will not ask you. Okay, उनके पास टाइम भी नहीं है. 2 इंटरव्यू होंगे, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल. टेक्निकल में स्टार्टिंग से ही वो लोग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, उनका काम जो है वो पूछेंगे. नॉन टेक्निकल में आपका मैनेजर जो है वो पूछेगा कि प्रीवियस प्रोजेक्ट में आप क्या कर रहे थे, आपका टीम साइज क्या था, आप खुद ही हैंडल कर रहे थे या टीम था. दैट्स इट. उसके बाद एचआर के साथ डिस्कशन होगा, आपका क्लोज होएगा. इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे थे, आपका पापा क्या कर रहे थे. Nobody is going to ask anything. इन सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी फैमिली के बारे में ये सब कुछ You will not be telling. Generally as a fresher you will be starting कि मैंने स्कूल पे कहाँ किया था, what is my background, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये you will मिला, not, स्टेट लेवल पे ये मिला, कोई you फर्क will नहीं not पड़ता. talk anything about it. जब आप वो लोग बोलेंगे introduce you, we will have a session on that. जब वो बोलेंगे introduce yourself, what you need to tell that I have close to 10 years of experience in IT, and from the last 5-6 years I am working in this field. This is my recent project and these are my roles and responsibilities. If you want to know more about me, please ask me. I will be happy to answer. That's it. In that way you need to tell. Okay, sir. गुड मॉर्निंग सर, मैं ललित नायक बात कर रहा था भद्रक से. मेरा एक क्वेश्चन था सर. Yeah, हेलो. Lalit. Yeah, I can hear you. सर मैं MBA फाइनेंस के बाद 2023 में जॉब किया हैदराबाद में एक लॉजिस्टिक कंपनी में लगभग 2 साल. तो Okay. उसके बाद मेरा स्पाइन इंजरी हो गया. 2023 सितंबर में मैं जॉब क्विट कर दिया. अभी भी मैं Okay. ट्रीटमेंट पर ही हूँ. मेरा स्पाइन सर्जरी हुआ 3 महीने पहले. मैं 1.5 Okay. साल से घर पर बैठा हूँ. तो मेरे लिए क्या इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी होगा कि नहीं होगा, और मैं तो फील्ड वर्क भी नहीं कर पाऊंगा, अभी डॉक्टर ने मना कर दिया है. तो मेरा गैप बहुत बड़ा रह गया है. So see, now this is little problem, but how we can try. See, final thing is you should have the skill. आपके पास skill है कि नहीं, that is what going to check. Second thing, आपका जो gap है, you need to project. आपको maybe projects कुछ करके GitHub में डालो या फिर
सोशल मीडिया में डालो, एंड यू शुड शो दैट मैं 2 साल से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मतलब माई हेल्थ कंडीशन इज नॉट गुड, बट आई वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस बाय गेटिंग सम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, मैं खाली नहीं हूँ, आई एम यूजिंग द टूल, सेम पावर बे में यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग द वर्क, मुझे काम पता है। ओके, बट आई वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ थिंग। then they may ask you, मतलब they will ask you कि मतलब आप फिट करोगे कि नहीं, मेरे प्रोजेक्ट में फिट हो पाओगे कि नहीं। in that way they will ask you the questions. If you are able to answer, then you will get the opportunity. But the thing here again is, if you are applying for TCS, Wipro, then it is going to difficult. But there are so many other mid segment companies are there where we can try. लॉजिस्टिक्स वाला एक्सपीरियंस को भी डेटा एनालिस्ट हाँ, डेटा एंड लॉजिस्टिक्स का आप देख सकते हो। मैं एक आपको इन्वेंट्री का रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, आई डोंट नो इफ आई हैव शोड यू। सो लॉट ऑफ रिपोर्ट्स वी क्रिएट, लॉजिस्टिक्स का बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक इन्वेंट्री, ये लैपटॉप इन्वेंट्री है, बट इफ यू आर फॉर एग्जांपल वर्किंग फॉर सम अदर लॉजिस्टिक वेयर हाउस एंड ऑल, यू विल बी हैविंग सो मेनी प्रोडक्ट्स, राइट? सो उस सब का Yes, sir. आप एनालाइज करो। आपको अगर आप लॉजिस्टिक में काम करो, यू हैव बेटर आइडिया अबाउट लॉजिस्टिक्स, राइट? कौन से लोकेशन में है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो यू कैन डू द स्टॉक एनालिसिस, यू कैन डू द मतलब ये जो मैंने बना था एक फ्रीलांसिंग था, उन लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप्स है, तो कौन से ईयर में कितने लैपटॉप्स है, कौन से वर्टिकल में बिजनेस में कितने लैपटॉप्स है, ईटीएल में कितने थे, इंफ्रा में कितना था, इंश्योरेंस में कितना था, एंड सिमिलरली कितने लैपटॉप्स के ओएस एक्सपायर हो गए, कितने एक्सपायर नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आई कैन डू इट। ओके, सो सिमिलरली बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल आपका लॉजिस्टिक कंपनी में, वी कैन क्रिएट रिपोर्ट। फाइनली यू नीड टू show that you were in touch with Power BI from last 2-3 years. Okay. 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 Yeah, people who want to leave, they can leave. We have closed, done. Only I am attending the questions. Anybody wants to leave, they can leave. Anybody have questions, they can ask. Okay, then I'm closing for today. Tomorrow we will start from the basic architecture से start करेंगे, and Thank you, sir. Thank you so much. okay. Thank Okay you, then. sir. Thank you guys. Yeah. Bye.